Let's begin with the questions of return of income. Very simple chapter. फटाफट ये सब questions हम लोग cover कर देते हैं. Question number 1. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. Return of income of LLP could be verified by any partner. See, the answer is of this is going to be disagree. I will disagree to this point. Why? Because return of income of LLP should be verified by designated partner only, and that's why I will say disagree. Okay, uske baad I will write, however, in certain situations, any other partner can verify the return of income of LLP. but वो कौन से situations है? Point number 1, due to any unavoidable reasons, designated partner is not able to sign the return of income or verify the return of income due to any unavoidable reasons, then any other partner can sign. Point number 2, or ये तो first point है, or designated partner is only not there. There is no designated partner. Then in that case, any other partner can verify the return of income. See, read the answer. I disagree. Return of income of LLP should be verified by a designated partner. Then any other partner can verify the return of income of LLP only in the following cases, where for any unavoidable reason, such designated partner is not able to verify the return. Point 1, or where there is no designated partner. ये तेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ. एकदम क्लियर है. आई विल मूव अहेड विद द सेकंड पॉइंट. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) in case of Mr. A मतलब इंडिविजुअल है, having total turnover of 160 lakhs, that is 1.60 crore. So 100 lakhs received in cash, and of course 60 lakhs are in electronic mode for the year ended 31/3/2022. Whether or not opting to offer presumptive income under section 44AD is 31st of October. वापस पढ़ता हूँ. Time limit for filing return of income under section 139(1) in case of Mr. A having total turnover of 1.6 crores for the year ended 31/3/2022. मतलब कौन सा financial year है? Financial year है 21-22. उसका 139(1) का टाइम लिमिट क्या होगा इफ ही इज एन इंडिविजुअल? वो लोग पूछ रहे हैं. वेदर और नॉट ऑप्टिंग टू ऑफर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD इज 31st of October. तो उन्होंने बोला है 44AD में उस इफ ही गोज फॉर 44AD और इफ ही डज नॉट गो फॉर 44AD, इट डज नॉट मैटर फॉर हिम. द रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 31st of October 2022. ये उन्होंने बोला है. ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है हम लोग को डिसाइड करना है. Okay, so either first of all, who is that person? That person is Mr. A मतलब individual का total turnover is 1.6 crores. अगर if he opts for 44AD, then in that case he is not required to do the tax audit. Since he is not required to do the tax audit for financial year 21-22, the return of income ka due date is going to be 31st of July. 31st of July 2022. Why? Because he is not required to do the tax audit. But on the other hand, if he does not opt for 44AD, then in that case he will have to audit the books of accounts. Why? Because his total turnover is 1.6 crore. Since his total turnover is 1.6 crores, he'll have to audit the books of accounts. And since he's required to audit the books of accounts, the return of income का due date is going to be 31st of October 2022. So मुझे इसमें ये point में ये बोलना है that whether he opts for 44AD or not is absolutely important for us. Because if he opts for 44AD, he is not required to do the tax audit. And if he does not opt for tax audit, he is required to do the tax audit, and उसके लिए ड्यू डेट होगा 31st of October 2022. So basically वो opt करता है नहीं करता है, इस पे ड्यू डेट भी डिफर हो जाएगा. And that's why I will disagree to this also. Perfect. एक बार वापस पढ़ता हूं मैं. In case Mr. A opts to offer his income as per presumptive taxation under section 44AD, then the due date under section 139(1) for filing the return of income for financial year 21-22 is 31st of July 2022. ये हम लोग ने वही की देखा अभी. Perfect है. If he opts for, because उसको tax audit applicable नहीं होता है इसके लिए. Now next, in case Mr. A does not opt for presumptive taxation under section 44AD, then he has to get his accounts audited under section 44AB. अगर 44AB में accounts audit करने पड़ेंगे, then
The due date of filing would be 31st of October 2022. ये तेरे दो क्वेश्चंस थे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के दो सब क्वेश्चंस थे. आई होप यू आर क्लियर विथ क्वेश्चन नंबर 1. I'll move ahead with question number 2. Mr. Vineet submits his return of income on 12/9/2022 for for assessment year 20 to 23, which means for financial year 21-22, consisting of income under the head salaries, income from house property, and bank interest. On 21/12/2022, he realized that he had not claimed a deduction under Section 80 TTA in respect of his interest income on the savings bank account. एक अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोग ने पढ़ा that he for financial year 21-22 he has filed the return of income on 12/9/2022. और उसका इनकम क्या था? उसका इनकम था सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बैंक इंटरेस्ट. Okay. After that, on 21/12/2022, he realized that he did not claim the deduction of 80 TTA in his return of income, which he filed on 12/9/2022. Okay. Then he wants to revise his return of income. Can he do so? Examine. वुड योर आंसर भी डिफरेंट, ये हम लोग थोड़े टाइम के बाद देखेंगे. पहले देखते हैं कि वो रिवाइज कर सकता है कि नहीं. अभी रिवाइज कर सकता है कि नहीं, इसके लिए एक पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या फैक्ट्स, एक बार थोड़ा सा कोलिट करते हैं. फैक्ट्स में क्या लिखा है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया ऑन 12/9/2022. Okay, for financial year 21-22. Now, first of all, we'll have to write that the due date, as per section 139(1), the due date of filing return of income for financial year 21-22 is 31st of July 2022, since Mr. Vineet is an individual. Okay. If the assessee files the return of income after 31st of July 2022, but before 31/12/2022, then that return would be called as belated return. अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये लिखना कैसे है. As per section 139(1) of the इनकम टैक्स एक्ट, इधर रेफर कर दो द एक्ट, तो हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है. As per section 139(1) of the income tax act, the assessee is required to file the return of income for, okay, return of income on or before the due dates prescribed therein for the respective persons. Due date in case of an individual is 31st July of the assessment year. Okay. In the present case, कौन था ये आदमी? Mr. Vineet is required to file his ROI for financial year 21-22 on or before 31st
2022. Section 139(4) allows the assessee to file the return of income belatedly, and the due date is 3 months prior to the end of the assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. Thus, due date of filing belated ROI, you'll have to write belated return of income for financial year 21-22, 3 months prior to the end of the assessment year. So financial year 21-22 है, उसका assessment year क्या होगा? 22-23. 22-23 का end कभी होगा? 31st March 2023. अभी देखो, 3 months prior to the end of the assessment year. मतलब 31st March 2023 से 3 महीने पहले, मतलब असेसमेंट ईयर एंड होता है 31/3/2023 के 3 महीने पहले, मतलब कहने से 31st of December 22. Yes, so 31st of December 22 is the due date of filing the belated return. बराबर है? Okay. Okay. So इधर लिखूंगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड ROI for financial year 21-22 is 31st December 2022. In the present case, Mr. Vineet has filed his ROI belatedly, but prior to the due date of filing return of income under section 139(4). Perfect. Now, in case of any alteration in the return filed, then assessee can do such alterations by filing the revised return of income under section 139(5). Perfect. Return of income section 139(5) allows the assessee to revise original as well as
Belated ROIs. The due date of filing revised ROI is 3 months. You should not write 3 numeric. 3 months prior to the end of the assessment year. अभी मुझे लिखना पड़ेगा 10, थोड़ा सा भी मैनेज करो. 10 विनीत, sorry, would be able to claim the deduction under section 80 TTA by filing a revised ROI under section 139(5) on or before 31st December 2022. And this is how you should complete the answer. This is how you should present the answer and this is how you should complete the answer. So ऐसा तुझे लिखना है रिटर्न ऑफ इनकम का कौन सा भी क्वेश्चन आया तो. नाउ अभी रिटर्न ऑफ इनकम के क्वेश्चन में मैंने कुछ भी ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज लिखा क्या जो मॉड्यूल में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है. टेक्निकल लैंग्वेज इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि टेक्निकल पूरा का पूरा लैंग्वेज टेक्निकल चाहिए, ऐसा नहीं है. जिधर जिधर इंपॉर्टेंट था उधर उधर आई यूज द टेक्निकल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, बट जिधर रिक्वायरमेंट नहीं है उधर मेरे हिसाब से मैंने लिख दिया. और आई इंश्योर दैट whatever I want to communicate, I'm communicating that thing to the examiner. बस ये कम्युनिकेशन का जो फ्लो है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. There should not be any gap in communication which you want to make and the examiner is actually understanding. Right? Okay, great. Then this was your question number 2. I will move ahead with question number 3. Last दो questions करते. Examine with reasons. Examine with reasons whether the following statements are true or false with regard to the provisions of Income Tax Act 1961. Okay. Assessing officer has the power, inter alia, to allot PAN to any person by whom no tax is payable. मतलब for example, I am not required to pay any taxes to the government. मैं कुछ भी मुझे taxes pay करने का requirement नहीं है. But still, can the assessing officer tell me to acquire the PAN? So as per the law, I'm not required to take a PAN, but still assessing officer is asking me to take a PAN. Can that assessing officer do this? Answer is 100% yes. 100% yes. Because assessing officer के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर देके रखा है एंड उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो थोड़े कंडीशंस थे, हम लोगों ने थोड़े कंडीशंस देखे थे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो तुझे पैन कंपलसरी होता है. Along with that, even though समझो कि even though it is not compulsory for me to acquire the PAN, but still assessing officer has the power to allot PAN to any other person which the assessing officer feels right. Right? This is your point number 1. I'm going to read this for you. Section 139A2 provides that the assessing officer may, having regard to the nature of transactions as may be prescribed, also allot a PAN to any other person whether any tax is payable by him or not, in the manner prescribed therein. इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड देयरइन, ऐसे करके तुम लोग छोड़ सकते हो. सो बेसिकली असेसिंग ऑफिसर के पास पूरा राइट है, उसको जिसको बोलने का है वो बोल सकता है, बिकॉज अपना वो बाप है कि नहीं. परफेक्ट. पॉइंट नंबर 2, वेयर द कर्ता ऑफ द HUF इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया. Where the Karta of HUF is absent from India, the return of income can be verified by any male member of the family. Understand one thing, ये किधर भी लिखा नहीं है कि any male member of the family can verify the return. See, if the Karta of that HUF is absent from India, then in that case, any adult member of the family can verify the return, and that adult member can be male or female.
एनी अडल्ट मेंबर है, मेल मेंबर किधर भी लिखा नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स. Section 140B provides that where the Karta of HUF is absent from India, the return of income can be verified by any other adult member of the family. Such member can be a male member or a female member. This is your question number 3. And the last question for the day, that is question number 4. Explain the terms return of loss under Income Tax Act 1961. Can any loss be carried forward even though the return of loss has not been filed as रिक्वायर्ड. ओके, बेसिकली तुझे क्या लिखना है, पहले रिटर्न ऑफ लॉस का टर्म एक्सप्लेन करना है कि रिटर्न ऑफ लॉस एग्जैक्टली होता क्या है. अगर रिटर्न ऑफ लॉस हुआ तो तुझे, ओके, रिटर्न ऑफ लॉस इज व्हाट, if any assessee incurs a loss, he'll have to file the return of income, and that return of income is known as return of loss. Return of loss is filed under section 139(3). Okay, then if you want to carry forward any losses, then it is mandatory for that assessee to file the return of income, before the due date mentioned under section 139(1). उसके पहले तुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड दोस लॉसेस टू द नेक्स्ट ईयर. ओके, अभी वो एक बार होने के बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैन एनी लॉस बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड. मतलब रिटर्न ऑफ लॉस मैंने नहीं फाइल किया तो कैन आई कैरी इट फॉरवर्ड. एक्चुअली द आंसर इज नो, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड, बट देयर आर टू लॉसेस. द गवर्नमेंट हैज सेड कि तूने रिटर्न फाइल किया नहीं किया डज नॉट मैटर, पर ये दो लॉसेस तो हम लोग तुझे हमेशा अलाउ करने वाले हैं. कौन से दो लॉसेस है, एक है हाउस प्रॉपर्टी लॉस और दूसरा है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन. ये दो लॉसेस, इवन दो आई डू नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम before the due dates mentioned under section 139(1), still I will be able to carry forward these losses to the next year. But तू मुझे बता कौन से लॉसेस में नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, कौन से लॉसेस, ये दो छोड़ के कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता. व्हाट विल यू राइट. अभी समझो ना कि स्पेशल कैटेगरीज मैंने बोला था, याद है क्या, कि हाउस प्रॉपर्टी के बाद नीचे कौन सा आता है, पीजीबीपी में स्पेशल कैटेगरीज कौन सा है. ओके, फॉरगेट एवरीथिंग. सैलरी में लॉस हो सकता है क्या, नहीं, तो वो बाजू में करो. हाउस प्रॉपर्टी हम लोग ने अभी देखा. पीजीबीपी में कौन सा हो सकता है, पीजीबीपी स्पेकुलेटिव बिजनेस हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस हो सकता है. बाद में कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज हो सकता है. तो ये सब जो लॉसेस है ना, ये सब लॉसेस तू कैरी फॉरवर्ड बेसिकली नहीं कर सकता. ठीक है, एक बार पढ़ते हैं. ओके, कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज तूने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है विद इन द ड्यू डेट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 139(1). ओके, एक बार पढ़ता हूँ. अ रिटर्न ऑफ लॉस is a return which shows certain losses. Of course, that's why that return is called as return of loss. Section 80 provides that the losses specified therein cannot be carried forward unless such losses are determined in pursuance of return filed under the provisions of section 139(3). ठीक है, no problem. Section 139(3) states that to carry forward the losses specified therein, the return should be filed within the time specified under section 139(1). Okay, and following losses are covered by section 139(3) are as follows. कौन से business loss to be carried forward, मतलब normal business loss, स्पेकुलेशन बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस, ये पीजीबीपी का हुआ. उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स और अपना आईएफओएस का आता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस. ये सब लॉसेस मुझे क्या करने पड़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट्स मेंशन अंडर सेक्शन 139(1). However, loss from house property can be carried forward under section 71B, and unabsorbed depreciation under section 32 can be carried forward even if return of loss has not been filed as required under section 139(3). मतलब 139(3) का रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी मैं दो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ. एक है हाउस प्रॉपर्टी लॉस और दूसरा है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. दोस्त एकदम परफेक्ट है. ओके, एंड दिस इज हाउ यूल राइट द आंसर, एंड दिस इज हाउ we are done with the discussions on the questions of return of income. I hope you are clear with this. I will see you in the next lecture. Bye bye, see you and take care.